अच्छे काम का हमेशा सपोर्ट भी करते हैं। जो अच्छा काम है अच्छी बात है। हमारे सम्मानीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मैं इस सदस्य का सदस्य एमपी बना। वो कभी इस सदस्य के एमपी नहीं बने, वो सीधे प्रधानमंत्री बन गए। एमपी का शपथ उन्होंने बाद में लिया, प्रधानमंत्री का पद पहले लिया। सुने विदाई पर भी बोल रहे हैं, लेकिन उनको एमपी का दर्द समझ में नहीं आता। बोले कि हम सब बंद कर दिए, एक दिन तनख्वाह एमपी का नहीं बढ़ा। क्या एमपी लोग जो गरीब हैं, जैसे हम लोग हैं, हम लोग तो वो तो आज मेट्रो में चढ़ते, हम तो रोज मेट्रो में चढ़ के प्लेन पकड़ने जाते हैं। पैसा ही नहीं है, गाड़ी का कहां से जाएं। इसलिए जो हमारे एमपी हैं, जो गरीब एमपी हैं, उनका भी ध्यान रखिए। अब निशिकांत दुबे जी के हम बड़े आदमी तो हैं नहीं, जो हम तो साधारण जानते हैं मेरे बारे में, जानते हैं चौबे जी मेरे बारे में कि कैसे हम गरीबी में चलते हैं। इसलिए हम चाहते हैं ये जो संविधान सभा के द्वारा जो आत्मा किया गया, और बहुत सारे लोग, देश की आजादी में कोई रोल नहीं है, देश के संविधान बनाने में कोई नहीं है। एक है कोई पेपर में पढ़े, कोई विवेक देवराय जी हैं, वो कह रहे हैं संविधान बदल देंगे। ये बताइए संविधान कैसे बदल देंगे। इसको हम चाहते हैं कि जो संविधान के साथ छेड़छाड़ किया जा रहा है, ये सब काम नहीं होना चाहिए, तभी लोकतंत्र बचेगा। और देश की जनता ने बड़े बड़े सत्तारूढ़ दल को चने चबवा दिए हैं। ये देश की जो जनता है, ये जागरूक जो भारतवर्ष की जनता है, जितने को भी अहंकार जब सत्ता में हुआ है, उसको चना चिबवाने का काम इस देश की जागरूक जनता ने किया और सत्ता से उखाड़ फेंकने का काम किया। ये हमारा लोकतंत्र है। ये लोकतंत्र कोई एक दिन का नहीं है, वैशाली के जमाने से इस देश में लोकतंत्र चला आ रहा, आज से लोकतंत्र है हमारा। ये तो ट्यूटर पार्लियामेंट जो कहते हैं, वो ट्यूटर पार्लियामेंट जो अंग्रेज लोग बोलते हैं, पहले मेरे यहाँ ट्यूटर पार्लियामेंट था, ब्रिटेन में पहले लोकतंत्र, उसके पहले मेरे यहाँ लोकतंत्र था। लिच्छवी का गणतंत्र, वैशाली का गणतंत्र, जो गणतंत्र इस देश में है, उसकी एक परंपरा रही है, उसी परंपरा के हम लोग हैं। आप जानते हैं अमेरिका में अभी जो चुनाव हुआ था ट्रंप और जे बाइडेन में, ट्रंप हमला कर दिया कि लोकसभा उसके जो उसका सदन है, बोला कि हम ही प्रधान राष्ट्रपति रहेंगे। लेकिन इस देश में ऐसा कभी नहीं हुआ। जब सत्ता परिवर्तन की बात आई हो, इस देश की जनता ने, इस देश के नेता ने, चाहे वो किसी दल के राजनीतिक नेता हो, किसी दल के प्रधानमंत्री हो, स्वेच्छा से जाके राष्ट्रपति के यहाँ इस्तीफा देने का काम किया। हम तो 3 बार लोकसभा में रहे। 11वीं लोकसभा में मुझे 3 प्रधानमंत्री को देखने का मौका मिला है। वाजपेयी जी 13 दिन के प्रधानमंत्री थे, तुरंत जाके इस्तीफा दिया। देवगौड़ा जी बने, उन्होंने इस्तीफा दिया। गुजराल जी बने, उन्होंने इस्तीफा दिया। ये तो हमारा स्वस्थ लोकतंत्र है कि जो बहुमत यहाँ होगा, उसके बाद सीधे हम राष्ट्रपति के यहाँ जाते हैं और इस्तीफा देते हैं। ये किसी के द्वारा नहीं, हजारों साल की परिपाटी इस देश की जो है, उसके द्वारा हमारा लोकतंत्र चल रहा है। और आप एक से एक दिन भी देखा है इस हाउस में, बड़े बड़े लड़ाइयां इस हाउस में भी देखा, लेकिन सब मिलके हम जानते हैं, जब हम लोग आपस में किसी बात पर बहस करने लगते हैं, तो जो हमारे सीनियर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, वो तुरंत हम लोगों को जाके उस बात को कहते हैं कि नहीं आप लोग शांति रहे। हम लोगों ने इस हाउस में जब वाजपेयी जी को देखे, जब 96 में हम लोग थे, जब वाजपेयी जी बोलने के लिए खड़े होते थे, विपक्ष से लोग बोलते थे, सत्ता पक्ष से सारे लोग हम लोग सुनते रहते थे कि वो क्या बोल रहे हैं। लेकिन आज क्या परिपाटी है, जब हम लोग बोलते हैं विपक्ष का लोग, एक भी सत्ता पक्ष एमपी नहीं रहता। ये नहीं है, नहीं, ये कोई उपस्थिति है, ये कोई उपस्थिति है, क्या कहते हैं निशिकांत जी, ये कोई उपस्थिति तो है नहीं। और हम लोग सब लोग रहते थे। ये स्वस्थ लोकतंत्र का इस देश में हनन हो रहा है। वो ये सत्तारूढ़ पार्टी के, आपकी जिम्मेवारी है, अरे आपकी जिम्मेवारी है, लोकसभा चलाना सत्ता पक्ष की जिम्मेवारी है, कोरम पूरा करना सत्ता पक्ष की जिम्मेवारी है, विपक्ष की सूची लागू नहीं है। इसीलिए आप जो कह रहे हैं, ये सच बात को स्वीकार करिए, आप ऐसा नहीं करिए। आप हम कोई ऐसा बात नहीं, ये आपकी जिम्मेवारी है, लेकिन आप तो सुनेंगे नहीं किसी का बात, आप बोलेंगे सब लोग चले जाएंगे। इसलिए स्वस्थ लोकतंत्र का हनन हो रहा है। इस पर भी हमारे सम्माननीय अध्यक्ष महोदय को विचार करना चाहिए। जब तक हम लोग इस पर विचार नहीं करेंगे, तब तक कैसे चलेगा हम लोगों का काम। और हम लोग जिन बातों को आप देख लीजिए, अब हमारे संविधान को बनाया कितने 2 साल कुछ महीना बताए सम्मानीय प्रधानमंत्री महोदय, और आज ये कोई विवेक देवराय या ओबेराय क्या है पता नहीं, नाम नहीं जानते हैं उतना, पेपर में पढ़े वो कहते हैं संविधान बदल देंगे। ऐसे कैसे होगा, बाहर का आदमी बोल रहा है कि संविधान बदल देंगे। अब हम लोगों को कल अपियर होना है कहाँ पे, फोटो सेशन, हम लोग पेपर में पहले ही पढ़ लेते हैं, बाद में सूचना हम लोग को जाती है कि कल हम लोग का ग्रुप फोटो सेशन होना। हम नोटिस ऑफिस में जाके पूछे भाई क्या है, बोला सवेरे पेपर में देखे कि पहले ही छप गया। पहले हम लोग को सूचना मिले, लोकतंत्र में हम लोग जब से थे, पहले एमपी को सूचना जाती थी तब मीडिया में जाती थी। अब हम ही लोगों पर सूचना बाद में जाती है, मीडिया में पहले चली जाती है। अब बहुत सारी बात है, आप सब जानते हैं कि जो लोकतंत्र जो बना है, अंबेडकर से लेके, नेहरू से लेके,
लोहिया से लेकर जितने लोगों ने हमारे लोगों ने किया है, सब हम लोग जानते हैं कि कितने अच्छे तरीके से इस हाउस ने आरक्षण का बिल भी पास किया है। बीपी सिंह के नेतृत्व में जब आरक्षण का बिल लाया गया था मंडल कमीशन को, कितना दुराव था, लेकिन सब लोगों ने मान लिया बाद में। फिर हमारे रामकृपाल जी बैठे हैं, अर्जुन सिंह जी ने शिक्षा का बिल लाया आरक्षण का, लेकिन आरक्षण का जो था वो धीरे धीरे निजीकरण कर रहे हैं। जो सोशलिस्ट वर्ड लिखा हुआ है इस सब प्रस्तावना में, वो तो खत्म हो रहा है। अब सारा चीज पूंजीपतियों को बेच दे रहे हैं। आप सारे होटल बेच रहे हैं, एयरपोर्ट बेच रहे हैं, रेलवे स्टेशन बेच रहे हैं, तो प्रस्तावना ही खत्म हो जा रहा है। कुछ दिन संप्रभुता का जो वर्ड है, ये बचे कि ना बचे, इस पर भी हमको ध्यान देना पड़ेगा। सोशलिस्ट तो खत्म हो चुका, सेकुलर खत्म हो चुका, डेमोक्रेटिक अब चुनी हुई सरकार को गिराने का काम करते हैं। एक संप्रभु शब्द अभी तक बचा हुआ है, उसको भी बचाने के लिए मेहनत करना, बाकी तो खत्म हो ही चुका है। आप सब चीज को खत्म कर ही रहे हैं, उसमें कोई बहुमत आप करेंगे ही। बहुमत में लोगों को सत्ता पक्ष और विपक्ष जो बना हुआ है, सबको मिलकर काम करने की आवश्यकता। एक एमपी का कोई सलाह नहीं लिया जाता। बात हम लोग की जो स्थिति है, एक पैसेंजर ट्रेन का स्टॉपेज, माननीय सभापति महोदय हम कहना चाहते हैं, एक पैसेंजर ट्रेन हमारे कहने से नहीं रुकती है। ये तो हमारी हाल है एमपीओ की। रिजर्वेशन हम डालते हैं कि कंफर्म होगा कि नहीं होगा, इसका गारंटी नहीं है। जो चिट्ठियां मंत्रियों जी को लिखते हैं, उसका जवाब तक नहीं आता। जो मंत्री चिट्ठी का जवाब ही नहीं देता, इसलिए हम लोग एमपी का भी मान प्रतिष्ठा इस शासनकाल में गिरा है। इस पर भी विचार करने की आवश्यकता। तनख्वाह तो मिल ही नहीं रहा, हम लोग बहुत परेशान हैं, इसीलिए इन चीजों पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। इसलिए हम चाहते हैं जो हम नए भवन में जाएं, नए उत्साह के साथ जाएं, नई सोच और नई विचार के साथ जाएं, और लोकतंत्र को में जो संप्रभुता है, इसको बचाने के लिए हम सारे लोग काम करें। सेक्युलरिज्म को बचावें, सोशलिस्ट को बचावें, और डेमोक्रेटिक गणतांत्रिक राज्य बनाने के लिए हम काम करें, सब मिलकर, सारे एमपी मिलकर। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। जय हिंद। थैंक यू। ऑनरेबल मेंबर श्री फतरेरी मेहताब जी। मेहताब जी। Is not ready. Not ready. Mehtab ji. Thank you. Ready? Sir. Unexpected call, eh? I think. Unexpected call. You're not ready. I'm unable. Unexpectedly. Yes. I was expecting Sivasana to speak before. No, she was a member late. But, came late. Because I don't have the habit of jumping the queue. And thank you for allowing me to speak. It is definitely a nostalgic moment. Nostalgic in the sense that when you leave one house and go to a new one, you have all the expectations of the new house. And you have all the expectations how it would be. And as we have seen the other day when it was inaugurated, the technological advancement that has been put forth before all our seats is lacking here. Here it is very difficult, you also know yourself, that we have to squeeze our legs to sit in these benches. But the best part is, we don't relax while sitting in the Lok Sabha, in this house. We always sit little bit Congestion. in action mode, yes, on the edge. And always the people also put us on the edge so that we always strive to get elected again and again. I remember the day I first got elected to this house in 1998. Our party was, for the first time, got elected to parliament. Yes. And during that period, there were a lot of anxiety, how long the government will last, because it was a conglomeration of 26 political parties led by Atalji. Anxiety was there. And while sitting in the central hall, normally when you have nothing to do or when you are anxious, you look upwards. And all of us, we were sitting in the bench where I still sit, in that last bench of Central Hall. And some of my friends always allow me to sit in that bench. We looked up. And in the inverted dome, we saw number of hexadomes. That time, one of my friend, my colleague had said,
my intention is to be a member of this House at least for 2 terms. Then I asked him, 2 terms means 10 years. अगर 10 साल हो गया तो काफ़ी है यहाँ मेंबर होने में. फिर हम अपने प्रोफेशन में निकल जाएंगे. That time I had, yes. And that time I suggested, very foolishly of course, that let us count the hexagons which are up there. Let us count it. And the day we get the correct answer, I'm yet to count it. The day we get the correct answer, counting it, think that that is the last term of yours in this House. And Mr. Shiv Kumar Udasi has already counted it. And he has been repeatedly telling us the eventuality. So I'm a short-sighted person. I'm very poor in arithmetic. I'm yet to complete the counting, and I still venture to count. Yes. Sir, we are celebrating Amrit Kal of Bharat, independent India. We are in the 75th year of our independence. I bow my head in reverence to those freedom fighters who gave away their present for our future, for our tomorrow. Let us not forget that it is because of their sacrifice, their titikya, tapasya, tyag, we gained freedom. And in Swadhin Bharat, our forefathers framed the Constitution not by diktat of a few, but democratically after full-fledged discussion, deliberation, and debate. It is the Constitution that has guaranteed us to remain one as a nation. They deliberated for 2 years, 11 months, the Honorable Prime Minister mentioned that time period. Many kingdoms ruled different parts of the present-day India in different eras. At no point of history, the borders of the present were borders of the past. This political map came into existence 75 years ago. A question may arise, is it language that keeps us together? Andhra Pradesh, sharing the same classical language, Telugu, split into 2 states, Madhya Pradesh, Bihar, Uttar Pradesh, being Hindi-speaking states, also split in not recent past. If language cannot unite even states and provinces, how can it be the basis of a nation? Are we united because of culture? Culturally, Bengalis and Bangladeshis share similar linguistic culture, icons, food, dress, but they have different majority religions and have fought bitter battles a few decades ago. Is it Hinduism that defines the unity of India? Then why is Nepal a different country? Had religion been the defining force of a nation, then all Muslim countries be one nation. All Christians countries also be in one nation, but that is also not the case. As we see, none of the factors like language, religion, or culture guarantee to remain one as a nation. The political landmass that we call Bharat or India as is because of our Constitution. Article 1 defines our nation
today. And that was framed in this edifice 75 years ago. We all believe in the Constitution. It is our respect towards our national flag, national anthem, and national emblem that holds us to our nation. It is our trust in electoral democracy, despite its flaws. We all believe that all are equal before the law, irrespective of gender, race, religion, caste, language, or culture, and this keeps us together. This present model has so far proved better in keeping us together. If we forget this, it will splinter into many parts, like how it was for most part of our history. Our republic is commemorating the 150th birth year of Sri Aurobindo, 90th death anniversary of Bipin Chandra Pal, and the 103rd birth anniversary of Bal Gangadhar Tilak. Long before, in 1905, these three intellectual giants laid the foundation of our freedom struggle with clarity on the power of Swaraj, nationalism, and Sanatan Dharma. It is the great resilience and tolerance of the Indian people that has contributed to the unity amidst fascinating diversity. It is the spirit of togetherness and tolerance and acceptance of other point of view that has bound us together, the people of Bharat, of diverse region and culture, while extreme individualism and separatism have marked the evolution of European nationalism. Admittedly, all was not well with the Indian civilization in its journey towards unity and integration of our nation. We should remember the painstaking effort that Sardar Patel had made in uniting this country. The princely states were declared as independent, and there were certain states, major states, princely states of that era, who wanted to ally with Pakistan. If Karachi port access was to be provided, Jodhpur was supposed to ally with Pakistan. If Vizag port was supposed to be provided, then Hyderabad would have emerged as a bigger country, including the eastern state provinces within it. Today, after 75 years, but that was dealt very strongly, and a great nation was formed. And today, number of fault lines are still there. The fault lines have been too many in modern India that we had inherited. Few from the past and new ones have been created after independence. I'll just give some instances. Caste exists. That is a major fault line in our country. Communal divide is there. No matter what we say, it is there. Terrorism is the biggest enemy. Ultra-communism or communist revolt is also affecting large part of our country. Paradox of personal law is glaring. Constitution guarantees freedom of expression, yet repressive personal laws take away basic fundamental rights of the individual. And this was demonstrated in the late 80s when Shah Banu got a verdict from the Supreme Court, and it was
undone here in this house. Yet, the concept of Bharat has existed for more than 5,000 years. Since the Harappan age till date, in spite of all the vicissitudes, the sense of oneness exists. Sir, the Parliament has been the platform of many events that have shaped this nation in the last 75 years. The Constitution is the instrument in making this country vibrant, modern, and forward-looking. It ensures rule of law, for which independence of judiciary has been protected and guarded religiously. Our Constitution is dynamic. The first amendment moved by the first Prime Minister, Jawaharlal Nehru, in May 1951, just a year after Constitution being adopted in the Constituent Assembly, clearly demonstrates keeping in tune with the time. And here I would like to quote what Pandit Nehru had stated. Now we come to this House for amendments because we have noticed some lacuna. We have, of course, of various interpretations by the court. And he goes on explaining, this House knows very well that there are many kinds of constitution in the world. There is the constitution which is not written down, citing the United Kingdom's constitution. And also he has mentioned about the Constitution of United States. And there he says, we have a written constitution like the constitution of that great country, where the constitution to some extent limits the authority of the parliament or of the Congress. So bringing a semblance of both together, where rigidity will be little bit of flexible and one can move ahead. That's how the first amendment relating to Article 19, addition of 31A and 31B was incorporated, so that the elected government can prepare specific programs for the development of the country. Sir, the basic structure is a moot point which I believe should be discussed when we are discussing about the 75 years of our independence. Supreme Court, I need, sir, a little bit of time. Rule of law means the parameters of decision making and discretion remains always circumscribed by the Constitution. We were witness to the revocation of Article 370 in this House. Uniform Civil Code is another relevant matter that needs to be fulfilled, as Constitution has stipulated. Lot of talk is being made about nation, one election. Various views are expressed. A committee has been formed. Let's wait for their recommendations. But I feel it's not something unachievable. I believe it is a necessity. We cannot have elections every year. And we should also remember what Gandhiji had said. He always said, India belongs to all who live in it. Feeling others' pain is the mark of a good individual. And the prarthana that is also sung in all Gandhian ashrams is Vaishnava Janato Tena Kahiye. पीड़ा जो दूसरे के पीड़ा जानते हैं वही वैष्णव ही होते हैं. And that is the essence of our republic, the mantra of our constitution. Sir, during my 25 years in this House,
I've That seen. they completed silver jubilee, the important matter. I have seen stringent law being implemented like POTA in a joint session, and the division of this House relating to Indo-US nuclear treaty. I witnessed Atalji's government fall by one vote when Naitikata was given a goodbye. I had the fortune to represent our parliament in the making of the Right to Information Act. That was in 2005. I felt elated the other day when I received a small note from the then Prime Minister after criticizing him forcefully in this House relating to the nuclear agreement, and I was totally taken aback. And that demonstrated the true democratic temper of the then Prime Minister, Dr. Sam. We also saw GST being implemented in a midnight hour. India celebrated 25 years of independence, and the freedom fighters were presented with a copper plaque by the then Prime Minister, Mrs. Indira Gandhi. On 50th year of independence, when Mr. Sangma was sitting in the chair, Parliament held special session which continued beyond midnight, as I don't know how long we'll be sitting here today, but that continued beyond midnight till 3 o'clock in the morning. On 75th year completion, not only a special session is being held, but a newly constructed